So namaskar all of you. Last class रे हमें question 1 to 10 पर्यंत complete करथिलु. ए वर्ष 2022 रो OS mains exam GS1 paper रो আজি rest 7 टा questions भी देखिबा 11 to 17 पर्यंत. So 11th question को आसंतु. What were the reasons for rapid growth of industrial revolution in Europe? Okay. So एटा basically बहुत जण एटा कहउतले कि बाहरु पडिछि. ओके वर्ल्ड हिस्ट्री नाही आउ एटा एक्चुअली बहुत गुडे डोमेन्स रे एटा कवर हे परिबो. हिस्ट्री रे तो हे परिबो. ओके आमे जदी देखिबा केतेटा अलगा डोमेन्स रे भी ए क्वेश्चन टा आसी परिबो. ठीक अछि. बट एनीवे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हैला रीजंस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप. ओके तो कारण उडा आपन दबार अछि. एटा 11th क्वेश्चन माने एटा ओके 15 मार्क क्वेश्चन. तेणु एटलीस्ट टोटली हमको 8 to 10 points एथरे दबार अछि टोटल आंसर. Discuss in the context of relative absence of modern industrialization in the prosperous lands of India and China till the 19th century. Okay, so India और China रे industrialization at least 19th century पर्यंत ओके जेमती यूरोप रे हितला सेमती काई की हेनी. तो दीटा जिंस एथरे पचछ. ओके सो 2 lines introduction अपन देबे आगे. So industrial revolution ऊपर किछि लिखिला. Okay, the industrial revolution marked a turning point in the history transforming European economies and societies. ठीक अछि. तापरे एटी ब्रिटेन विषय रे लिखिला. ब्रिटेन became the epicenter of this change. Other prosperous regions like India and China lagged behind in modern industrial development until much later. So ठीक है हम क्वेश्चन है 19th century देछि. Okay. The contrast raises questions about the factors that promoted industrialization in Europe while hindering it elsewhere. तो गोटे जगह रे होतला अलगा जगह रे काहे की होनटला. ठीक अछि. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैला यूरोप रे काहे की इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिका आपण बहुत फास्ट पेस रे बढ़ी गला. ओके तो 5 पॉइंट्स हमें एथरे देखुछु. कोन प्रथम हैला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. ओके सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस तांकर अधिका थिला. तांकर सेठी जेमति कि आज हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहउछु. ओके तो सेमति तांकर नुवा नोवेल आइडियाज ओके को ट्रांसफॉर्म करबा इनटू एक्चुअल एप्लीकेशन से जिंसटा से माने बहुत आगु स्टार्ट करथिले. ओके आकु जदी हमें right from the enlightenment period और जो प्रिंटिंग प्रेस आस्ते आस्ते से सब जिन सोडा स्टार्ट हैला अप टू मेजर इंडस्ट्रियल ओके चेंजेस किंबा नुआ नुआ इनोवेशंस करिका. ओके सो फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. ओके स्टीम इंजन स्पिनिंग जेनी केते एग्जांपल्स तर देछि. तापरे अबंडेंट रिसोर्सेस. तो तांकर बेसिक रिसोर्सेस केतेटा थिला नेचुरल रिसोर्सेस जोडा तांको हेल्प कला लाइक कोल आयरन. ओके सो दैट fueled the industrialization in Europe. ओके तापर आसिला कैपिटल accumulation. So profits from trade and colonies provided resources for investment in factories and infrastructure. जो से माने काहे ना ए यूरोपियन पावर्स मेनली जते बडो यूरोपियन पावर्स सेतल थिले सबु माने इंपेरियल पावर्स थिले. कॉलोनीज माने फ्रांस हे जाऊ ब्रिटेन हे जाऊ. ठीक अछि. अलगा पोर्तुगाल और स्पेन कथा तो हमें प्रथम रही देखिछु. ओके तो एमाने बेसिकली अलगा कंट्रीज उडा को कॉलोनाइज करिके अलगा लैंड्स उडा को कॉलोनाइज करिके सेथुर रिसोर्सेस नै कि से माने यूज करूथिले. तो कैपिटल एक्युमुलेशन सेटु जा तांको लाभ होतला से गुडा से माने यूज करथिले. तापरे स्ट्रांग एग्रीकल्चरल बेस. ओके एटा यूरोप रे स्पेशली ब्रिटेन करिका रे. ओके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन. ओके सो फ्रीइंग अप लेबर फॉर इंडस्ट्री. तेणु जेतु फूड प्रोडक्शन तांकर सेठी फूड सिक्योरिटी कोटे टाइप रा आसी गला. बहुत लोक आ रिक्वायरमेंट नथिला कि से माने समस्त एग्रीकल्चर रे काम करिकि फूड सिक्योरिटी पई ओके बेसी कंट्रीब्यूट करंतु. तो से माने जाई कि इंडस्ट्री रे काम करि पारले. स्ट्रांग agricultural base. Okay, and that is why the agricultural labor was freed up to go and work in the industrial sector.
ओके तापर सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन जो एंसिलरी इंस्टीट्यूशन गुड़ा ओके सेगुड़ा तांकर सेठी थिला गोटे इंडस्ट्री पाई बहुत गुड़े अलगा ओके एंसिलरी ताकू सपोर्ट इकोसिस्टम दरकार जोटा कि तांको पाखरे सेतेबेले थिला ओके जेमति कि स्टेबल पॉलिटी इन मोस्ट ऑफ यूरोप ओके किछि एक्सेप्शंस अछि पॉलिटी वाज मोर और स्टेबल ओके तापर प्रॉपर्टी राइट्स तांकर से सब प्रॉब्लम्स नथिला well defined property laws thila okay and a patent system European countries रे आम ठू बहुत आगुरो आस्तला इनफैक्ट जो ऑटोमोबाइल्स करिका अपन जो बनौचंती ओके अपन देखछोनी कि यूरोपियन प्लेयर्स माने डोमिनेंट रहंती सेतरे गोटे बड़ रीजन हला कि जो हम जाको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कोचू ओके सेठी जो पैटेंट आउ हमर वेरियस जोटा इन्वेंशन होची ताकू प्रोटेक्ट करबा जोटा कि अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहउचंती एही कांसेप्ट बहुत आगुरु यूरोप रे थिला ओके so supportive institutions they had that ancillary institutions or the complete ecosystem that would support their industries जोटा कि अलगा स्पेशली एशियन कंट्रीज रे नथिला एठी जेतु इंडिया और चाइना दीटा जिंस ऊपर कहउछ ओके त इंडिया और चाइना रे कोन पई हेलानी सो फर्स्ट हला द कॉलोनियल पॉलिसीज ओके सो कॉलोनियल पॉलिसीज एमती थिला कि जे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थिले तांको फेवर रे बहुत कम जिंस थिला आउ अगेंस्ट रे बेसी थिला ठीक अछि सो दैट इज द कॉलोनियल पॉलिसीज फॉर एग्जांपल एठू रॉ मटेरियल्स बहुत चीप रेट रे नै कि से माने ओके प्रोसेस करी कि तांको देश रे से माने बिकुथिले राइट एटा आपण इकोनॉमिक्स रे भी पढिबे आउ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रे भी पढिबे ओके जो हमरो बंगाल रो कॉटन सेटा वर्ल्ड फेमस थिला बट deliberately through policies and through other taxes and other things semane chahuntile Manchester based okay जो तांकर सेठी बहुत बड़ पोर्ट थिला आउ तांकर कॉटन गरिका सेठी टिके सेटा आस्ते आस्ते वर्ल्ड रे ओके बेसी लोक माने सेटा नियंतु सो to do that what they did they tried to destroy and to some extent they were successful जोटा कि हमरो बेंगल कॉटन टाकू से माने ओके पछरे पके पे चेष्टा करथिले आउ टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल भी हेथिले तो एमती एटा गोटे एग्जांपल एमती बहुत अलगा एग्जांपल्स भी अपन पाइबे सो कॉलोनियल पॉलिसीज तापरे मु जेमती कहली से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओके सेगुडा से जिंस कांसेप्ट बहुत हमर परे आसिला ता छडा एठी जनरल जो हमर लैंड होल्डिंग पैटर्न्स और लैंड होल्डिंग लॉज कंप्लीटली अलगा थिला एठी धरंतु गोटे के यू नो एबे भी जेमती होची एबे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एबे तो बहुत ही टिके भलो हे गलानी सिस्टम गवर्नमेंट जदी गोटे जगह नबो देन बहुत तेर ऑपोजिशन हबो ओके जोड़ा कि यूरोप रे से जिंसटा नथिला सो लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स सो ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग सिस्टम डिस्करेज रिस्क टेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो हां जमीटा पड़ी बहुत अल्प फसल होची कि जहां भी फसल होची अल्प पैसा होची किंतु जमीटा मो नार अछि पड़िताउ ओके जोठी कि यूरोप रे सेटा कोन से जमीटा को से माने फैक्ट्रीज के अलगा कोनोसी ओके काम रे ताको लगै कि जोठी कि बहुत भलो प्रॉफिट एम्प्लॉयमेंट से माने बाहर करथि तापरे फोकस ऑन हैंडीक्राफ्ट सो एठी कोन हमर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैंडीक्राफ्ट्स आ ऊपर बेसी फोकस थिला इंडस्ट्रीज ऊपर एते फोकस नथिला इवन हमें जदी देखिबा गांधी जी को भी कांसेप्ट से आई थिला कि गोटे विलेज बेस्ड इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी रो ओके तो फोकस वाज ऑन हैंडीक्राफ्ट्स ओके तापरे सोशल बैरियर्स भी थिला तो फॉर एग्जांपल एटी एग्जांपल कास्ट रो देछि ओके सो कास्ट बैरियर कौन थिला ना लाइक एई पर्टिकुलर जगह ओके एई पर्टिकुलर इंडस्ट्री रे एटा मु सेटअप करछि मो कास्ट हला आया तो एई कास्ट लोगों को मु जनरली प्रेफर करिबिनी ओके तो से टाइम रे 1970s 80s रे ओके सॉरी 1700s एंड 1800s से ए जिंसटा आपण सेतरे देखि परिबे सो सेतर कोन ना जो माने भलो कारीगर थिले जो भी कास्ट रो हितांतु तो सेमानकर अपॉर्चुनिटीज कम जाउथिला ओके सो सोशल बैरियर्स थिला चाइना रो तारो निजरो अलगा इश्यूज थिला फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक आइसोलेशन चाइना कोन करथिला ना चाइना
इंडिया जमती कॉलोनाइज हेकी रहितला चाइना रो सेमितिया हिस्ट्री नथिला तांकर सेठी जो इंटरनल ट्राइब्स की क्लैन्स थिले तांको भीतर जा तांकर इश्यूज थिला ओके सो प्रथम रु ही चाइना रो गोटे जिंस थिला कि आमे खराब जिंस बनौ पछे किंतु आमे आम जिंसटा निजे बनै एटा एबेकार तांकर हेनी फॉर एग्जांपल इफ यू सी चाइनीज डिफेंस तांकर एयरफोर्स रो जो सब जे सीरीज फाइटर जेट्स अछि दे आर रेटेड एज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड ठीक अछि जोला कि एडवांस्ड भी से माने उसका इट हैज नेवर बीन टेस्टेड से डायरेक्ट वार बहुत वर्ष होला का संगे करनी ओके आउ सेही हिसाब रे तो से माने फर्स्ट रो सेल्फ सफिशिएंसी ऊपर तांकर एम्फासिस ता थिला ओके तेनु से पई से माने अलगा कंट्रीज रु बहुत एक्सपोर्ट की इंपोर्ट करिवा से माने से टाइम रो ओके एते प्रिफर करू नथिले राइट सो तांको ट्रेड भी लिमिटेड थिला ओके तो सेटा इकोनॉमिक आइसोलेशन को आस्ते आस्ते इट लेड चाइनीज टू इकोनॉमिक आइसोलेशन एटा 1980s लेटर 1980s रे से तांको इकोनॉमी की खोलिले ठीक अछि स्टिल देन गोटे स्क्यूड सिस्टम तांकर कोन ना से माने आपणकर एक्सपोर्ट बहुत करिवे आपणकर इकोनॉमी को किंतु इंपोर्ट करिवे ओके कोन करिवे से इंपोर्ट नै कि तांको लोक माने तांकर ही जिंस यूज करिवे ठीक अछि से माने अलगा कंट्रीज रो प्राय जिंस ओके तांकर रिक्वायरमेंट न था रादर से माने जो जिंस तांको देश रे दरकार भी नहीं तांको लोक यूज करंती नहीं बट से माने सेगुडा बनै की अलगा देश को एक्सपोर्ट करछन ओके एबे बहुत सारा चेंज हेलानी बट देन फॉर एग्जांपल होली कलर्स तांकर सेठी होली नहीं ठीक अछि तो बट होली कलर्स सेगुडा बहुत अगरु से चाइनीज कलर्स आसुतला एबे भी आसुची बट एबे इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन माने भी बहुत स्ट्रांगली सेगुडा देखुचंती ओके दिवाली बेले अपन देखुचंती होली बेले भी ओके तो एडा खाली इंडिया रे होनी सब जगह रे भी सेमती होची काहे ना से माने कोन करबे ना आपनकर ओके मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स ओनली इंपोर्ट और आपन देश रो से किछ किने कि बहुत कम किने तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रो बहुत सेथरे ओके डेफिसिट आपनकर रहबो एनीवे एटा हला फर्स्ट इकोनॉमिक आइसोलेशन चाइना तो एथरे देखिया अछि कि इंडिया रो अलग रीजंस थिला चाइना रो अलग रीजंस थिला सेकंड हला स्टेट कंट्रोल ओके तो जो टाइम पीरियड कथा में कहूछु ओके द इंपीरियल सिस्टम एम्फसाइज सेंट्रल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी समटाइम्स हिंडरिंग इकोनॉमिक इनोवेशन स्टेट कंट्रोल थिला तापरे प्रेफरेंस फॉर एग्रीकल्चर ओके तेणु तांकर कोन थिला ना जो चाइनीज फिलोसॉफी रे एग्रीकल्चर को बहुत एम्फसिस दिया होतला जस्ट लाइक इंडियन ये रे आउ प्लस आपण अलगा भी जदी साउथ किंबा एशियन कंट्रीज को देखिबे तो सेथरे भी आपण देखिबे एग्रीकल्चर को बहुत एम्फसिस दिया होतला एटा हला थर्ड पॉइंट फॉर चाइना फोर्थ पॉइंट थिला लिमिटेड ज्योग्राफिक एडवांटेज ओके तो आमे एठी कोन देखु यूरोप रे तांकर कोल डिपोजिट और आयरन ओर बहुत थिला सेमिति कह कहले चाइना रो भी किछि कम नथिला ओके बट कथाटा हला सेगुडा एक्सेसिबल कम थिला ओके so China's coal deposits are often less accessible compared to Europe so they had the resources but खाली resources तो रखिले हबनी सेटा सेमति accessible भी हबा कथा से जिंसटा बहुत ही कम थिला and then the opium wars okay so you know opium wars जोगु तांकर economic political and even social okay tensions तांकर सेठी रहउतिला ओके तेणु जो जदि से वार्स ओपियम वार्स हे न थांता ताले से पैसाटा से माने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रे लगे पारथांते सो रिमेंबर दैट द रीजंस फॉर इंडिया एंड चाइना विल बी डिफरेंट ओके क्वेश्चन टा से पचाची क्वेश्चन पचारतिला हमर व्हाट आर द रीजंस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप सेटा हमें ए पांचटा पॉइंट रे देखिलु कोन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस अबंडेंट रिसोर्सेस तिला ता पाखरे कैपिटल एक्युमुलेशन से माने कॉलेज जो तमर सब कॉलोनीज बोलैतिले स्ट्रांग एग्रीकल्चरल बेस एंड supportive institutions okay तापरे second part of the questions थिला कि इंडिया और चाइना रे सेही रेट रे काई की इंडस्ट्रियल ओके डेवलपमेंट हे परलानी तो इंडिया पई हमें देखिलु कॉलोनियल पॉलिसीज थिला लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स थिला फोकस ऑन हैंडीक्राफ्ट्स और सोशल बैरियर्स चाइना पई इकोनॉमिक आइसोलेशन स्टेट कंट्रोल प्रेफरेंस फॉर एग्रीकल्चर लिमिटेड ज्योग्राफिक एडवांटेज एंड ओपियम वार्स ओके सो एटा एक्चुअली जेंती सिलेबस देथला ना सिलेबस रे डिटेल सिलेबस रे एटा नथिला तेणु बहुत पिला को सेटा इश्यू गोटे हैला
बट एनीवे एबेठू आपन को वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़िया पड़िबो इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़िया पड़िबो किछटा पार्ट टाउ छाडी होबन रादर जो पार्ट टा बहुत भलरे देथिला पेपर 1 रे द हेरिटेज ऑफ ओडिशा ओडिशा रो एते डिटेल सिलेबस देथिला अनफॉर्चूनेटली ता भितरो किछि क्वेश्चंस आसिलानी गोटे दीटा डायरेक्ट क्वेश्चन से आसिला तो गोटे जी दी लाइन रे बेबे कंक्लूजन आपण दे परिबे ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 12 तो एई टाइप रो क्वेश्चन हमें एबे बेसी एक्सपेक्ट कर परिबा दीस आर बेसिकली गोटे कम जल्दी यूपीएससी रे थाए गोटे स्टेटमेंट देथिबो से स्टेटमेंट रो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपण को ओके प्रूफ करिया पई पड़िबो कि ता ऊपर लिखिया पड़िबो जेंति कि क्वेश्चन नंबर 12 को आसंतु डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज एवरीबॉडीज बिजनेस डिस्कस विथ एविडेंस ओके एवरीबॉडीज बिजनेस माने कोन सेता आपण वर्ल्ड टाको डिवाइड करचंदी कि you know north south divide south south cooperation ठीक अछि north in the sense कि economically developed countries ताको कहउछंती south in the that sense आपण कहउछन जोडा developing countries जोडा अछि south south cooperation माने developing countries भितरे cooperation right so कथाडा हला एठी से कहउछि कि it is everybody's business जे developed country already से माने गुडे emissions करि सरचंती तांकर भी responsibility जो माने डेवलपिंग कंट्रीज एबे डेवलप करचंती से माने जहा भी ताकर डेवलपमेंट पई ताकर यू नो जहा इकोनॉमिक ग्रोथ ओके सेथरे बहुत आउरी कार्बन एमिशंस हबो किछि से माने कमाया भी चेष्टा करियो बट सेटा हबो ओके जहा भी हेले हबो सो बोथ हैव टू टेक केयर ऑफ द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डिस्कस विथ एविडेंस से दिस तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और डीआरआर ओके एथरे जी 3 लाइन रो इंट्रोडक्शन अपन दे परिबे ए जो पीडीएफ टा एटा टेलीग्राम चैनल रे ओपनली अवेलेबल अछि हमरो तो सेउटू डाउनलोड कर दे परिबे ओके देन व्हाई डीआरआर इज एवरीबॉडीज बिजनेस तो रीजंस ओके और इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ डीआरआर ओके तो फर्स्ट असला आपनकर इंटरकनेक्टेड रिस्क आपण एंती कहि परिनी से गोटे बहुत दूर देश रे तांकर कोन प्रॉब्लम होउची एपटे आइस कैप यू नो पोलर कैप्स मेल्ट हेले से बुडी जीवो तो हमर एबे त किछ सेमती भाबिबार नै हो कि आमे तो सेफ होछु ना ओडिसा रे तो से जिंसटा नै सेटा हम ऊपर भी इफेक्ट पकेबो टेक द केस ऑफ मालदीव्स ठीक अछि इट इज जनरली थॉट दैट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 30 40 50 वर्ष भितरे मालदीव्स रो जते अटोल्स अछि ओके से सब बुडी जीवो ठीक अछि सेटा हमकु भी इफेक्ट करिवो हमर भी लक्षद्वीप एंड अदर जोटा हमर आइलैंड्स अछि तब बहुत सबमर्ज हेबे ठीक अछि सो और सेगुड़ा हेले कोन ना सेठू जो जिंस प्रोडक्शन होची कि जा भी होची सेगुड़ा इट विल बी अफेक्टेड ओके एंटायर सप्लाई चेन विल बी अफेक्टेड ठीक अछि सो इंटरकनेक्टेड रिस्क्स आपण एंती कहि परियनी सेठी हे गला तो हमें सेफ होछ ओके सेकंड हला शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी तो ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी जते गवर्नमेंट हेतांतु ओके ट्राइब्स हेतांतु कम्युनिटीज हेतांतु कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट बिजनेसेस हेतांतु नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हेतांतु समस्तंकर एटा रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक अछि दैट इज व्हाई इट इज एवरीबॉडीज बिजनेस बिकॉज़ एवरीबॉडी विल बी अफेक्टेड ठीक अछि जेतबेले मालदीव्स रो एग्जांपल तो हम नउचु सेठी आपनकर जेतेबेले अटोल्स रा बुडीबे तो रिच लोक हो पुअर लोक हो बहुत पावरफुल लोक हो तार जा प्रॉपर्टी अछि कि सब बुडीबो सेटा ठीक अछि तो एमती तो नाही कि डिजास्टर टा रिच को छाडी दबो खाली पुअर को अफेक्ट करिवो हां ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑफ their economic condition and their accessibility okay lack of accessibility to basic things poor people are more vulnerable ठीक अछि सो तापरे प्रिवेंशन इज की तो एबे कोन ना आगुरु जंती थिला डीआरआर रे किंबा आपण डिजास्टर मैनेजमेंट रो कांसेप्ट थिला कोन ना रेस्पॉन्स कोन गोटे हे गला ताले रेस्पोंड करो ठीक अछि रेस्क्यू करो रिहैबिलिटेट करो एबे टू से जिंसटा प्रथमरु आपण चेष्टा करिया यू टू ट्राई टू प्रिवेंट इट okay try to mitigate it try to prevent it beforehand okay so and it is cost effective more cost effective than the response tapare local knowledge this is very important jo आपनकर सुनामी हेतिला इंडियन ओशन रे से टाइम रे बहुत गुडे जगह रे देखा गला कि ट्रेडिशनल घर जो मान सब करथिले कोस्ट रे रहउथिले तो से माने कोन करथिले ना स्ट्रांग घर भी एते नुह बैम्बू घर के घर हेतिला किंतु ताकर ट्रेडिशनल नॉलेज हिसाब रे से माने तळटा गोटे बेसमेंट टाइप रो फांका छाडी दिथिले ठीक अछि खाली बैम्बूस लागिते तो पानी जेतळे आसीबो से पास कर जोता थ्रू घरे जो लोक छ ताकर किछ असुविधा होबन ठीक अछि सो दिस आर ट्रेडिशनल नॉलेज एमती सब जगह रे हमें देखिलु कि ट्रेडिशनल नॉलेज को भी
emphasis dabar achi. Okay, so local knowledge and traditional knowledge has to be incorporated into this DRR. Khali emti nahi ki joda ki apna you know modern knowledge or joda scientific knowledge khali seta hi use hobo. Traditional knowledge भी बहुत important. तापरे resilience building. Next question is say climate resilience ऊपर ही पचारची. तो resilience building माने कि आपणकर गोटे community की गोटे population जदि एमती किसी असुविधा हैला, okay, से माने केमिति how they will stand up again on their feet. Okay, so resilience building and sustainable development. तो जहाँ भी development होची सुधा long term को देखी करियर होची. Okay, ताको climate को जमती किसी इफेक्ट एते बेसी हबनी. ओके इकोसिस्टम को देखि कि तो ग्रीन डेवलपमेंट जोटा कहउछ सेटा ऊपर फोकस रहइबो. तो एटा हला काहे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाई डीआरआर इज एवरीबॉडीज बिजनेस. से तो खाली कहछि ना कि इट इज बिजनेस ऑफ ऑल, एवरीबॉडीज बिजनेस. तापर आसिला एटा बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आपन लिखिया पड़िबो कि एई मैटर रे इंटरनेशनल कम्युनिटी कोन करिछि आज पर्यंत. तो एथरे तीनिटी मेजर ओके डीआरआर रिलेटेड कि डिजास्टर मैनेजर रिलेटेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज अछि. गोटे तो सेंडाई फ्रेमवर्क हला, सेंडाई फ्रेमवर्क जहां भी हला अपन लिखिया पड़िबो. ओके तापर एसडीजीज हला, एसडीजी ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन उडे पड़ी सरथिला जोटा में प्रीवियस सेशन रे डिस्कस कलु. आउ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज आउ भी बहुत उडा अछि, बट हमें एते हमरो संबंध एति की भी लिखि होबनी. जो माने नुवा प्रिपेयर करछंती पीडीएफ टे डाउनलोड कर देबे. अपन देखिले पॉइंट्स उडा अपन चेष्टा करबे सेति की टाइम भीतर सारिया पे गोटे गोटे क्वेश्चन रो स्टार्ट करंतु. ओके एंड यू विल सी दैट एति की भी लिखिबा पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके जेति की टाइम दिया अछि. तापर इंडियन पर्सपेक्टिव टा भी हमें ऐड करि परिबा एथरे कि हमरो बहुत गुडे एरियाज अछि जोटा डिफरेंट टाइप रो नेचुरल डिजास्टर्स को प्रोन. फॉर एग्जांपल हमरो एटी साइक्लोन्स अछि, फ्लड्स अछि. ओके तापर हिमालयन एरियाज रे सेटी लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स ए सब जिंस अछि. ओके सो सेटा अपन लिखबे. तापर एनडीएमए ओके एनडीएमए एंड एनडीआरएफ भी अपन लिखि परिबे. ओके तापर शिफ्ट टू प्रोएक्टिव अप्रोच. आगुर जोटा थिला कि खाली अपन डिजास्टर हैला परे रेस्क्यू करो, रिलीफ रेस्क्यू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ता ऊपर एबे जहां फोकस तो अछि, प्लस मेन फोकस हमर रहउची कि प्रोएक्टिव अप्रोच. ओके केमिति हम चेष्टा करिबा कि डिजास्टर ओके रेजिलिएंट होबा आउ डिजास्टर जदी कोठी गोटे स्ट्राइक करिवार चांसेस अछि ताको हम कमेइबा केमिति. ओके so focus is on prevention, mitigation, preparedness. okay ता ऊपर बेसी फोकस अछि. एग्जांपल आपण ओडिसा रो भी दे परिबे. यू सी आफ्टर द सुपर साइक्लोन आपण देखिबे फाइलिन भी बहुत गोटे डिस्ट्रक्शन करि पार थांता, बट बिकॉज ऑफ दिस यू नो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट ओडिसा गवर्नमेंट कर देथिल ता गुरु हमरो मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ हमरो हैला. इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस तो सेमती बहुत डिफिकल्ट ताकू ये करबा, बट much lesser than super cyclone. ठीक अछि. आउ तापर भी जो सब साइक्लोन्स आसीची ओके तो मोर और लेस हमरो बेसी क्षति हेइनी काहे कि ना we have learnt our lesson. so shift to proactive approach जो थरे बेसी कंसंट्रेशन हमरो प्रिवेंशन ऊपर रहला, मिटिगेशन ऊपर रहला, प्रिपेयर्डनेस ऊपर रहला. ठीक अछि. तापर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वेरी इंपोर्टेंट कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट ता कम्युनिटी बेस्ड हो काहे कि ना से ही बेसिकली आपनकर फर्स्ट ये कि respond करिवे. they are the first responders. okay remember that community is always the first responder. धरंतु कोडी गोटे साइक्लोन हे गला तो आपनकर एनडीआरएफ आउ ओड्राफ एमाने प्रथमे पहुंचबे, फायर डिपार्टमेंट पुलिस प्रथमे पहुंचबो ना आपन नेबर प्रथमे पहुंचबो. ठीक अछि. सो इफ योर नेबर नोस हाउ माने ताकू फर्स्ट एड और बाकी सब ट्रेनिंग दिया हेची तो सी आसी के हेल्प करिवो कि आपन कॉलोनी रे जो मान रहउचंदी से माने आसी के आपन को हेल्प करिवे. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आउ लास्ट रहला टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. ओके एबे बहुत प्रकार टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट यूज करूची जंतु जीआईएस हला, आ गोटे क्वेश्चन पडिची जियो इन्फॉर्मेटिक्स ऊपर एंड लॉट ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर डिजास्टर ओके रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके सो एटा गोटे तार क्वेश्चन नंबर 12 थिला. क्वेश्चन 13 what are the 5 P's in sustainable development goals? Explain briefly. SDGs रो जो पांचटा P अछि. Okay that is the people, planet, prosperity, peace and partnership. Okay 5 P's of sustainable development goals. ठीक अछि. So people, right? So the focus is on the people. Finally लाभटा काहू हो से लोकन को पय हो ना. जेमते एठी देला
poverty, to end poverty and hunger, ensure healthy lives, provide quality education, and achieve gender equality for all. So the focal point are the people. Okay. तापर आसला planet. तेणु protection of the planet for future generations. ठीक अच्छे जो थरे हमर आसीगला climate change. Okay. Sustainably managing oceans for and forests, the natural resources hela, and conserving biodiversity. Okay. Second P ta hela planet. तापर prosperity. तेणु economic growth हमरो दरकार but sustainable way रे. Economic growth must be inclusive and equitable. एमती नुह कि आपनकर rich becomes richer and poor becomes poorer. सेटा हबा कथा न. Okay. SDG promotes sustainable industries, decent work, and reduce inequalities. ठीक है जी. The prosperity हला third P. Fourth P हला peace. Okay. So जदि सब जगह एबे आपण कहबे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यूक्रेन रे आउ लेट्स से हमें सीरिया रे इट सब ट्राई करबा. इट नो वन इज गोइंग टू गो एंड टेक दोज इनिशिएटिव्स देयर बिकॉज ऑफ द war. Okay. Prolonged war जोटा सेठी चलती. तेनो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जदि पीस नथिबो ताले पॉसिबल टोटली नो. Okay. So SDGs they will address your conflict resolution, promote the rule of law, and reduce violence and discrimination. तापर partnership. Okay. That is it तो खाली governments कर देबेनी ना. तो all the governments, okay, non-government organizations, communities, citizens group, civil societies, समस्त मिसिले एटा हे पारे. तापर examples केतरा से देछि. Okay. So solar energy for rural communities. This is people रे जाउची, planet रे जाउची, prosperity रे जाउची. Community based watershed management, planet रे जाउची, peace रे जाउची, partnership रे जाउची. Okay. और भी आपण examples एटा specific examples भी दे पारे. Okay. So तापर आसिला question 14. What is precision agriculture? Okay. Will it be possible in Indian agriculture? So let us see that. What is precision agriculture? So as you can see, amara kon hochi na. Let us take for example Odisha. Amara eti flood irrigation hochi. Canal ru government pani dauchi. तो जे चासी जी से तारा paddy cultivation କରୁची. Okay. से तारा छाड़ दउची तारा जितने पानी होची बहुत भलो. Okay. से हिसाब रे चलची. But that is not the case. Okay. Precision agriculture कोन ना तारा exactly जेतिकी inputs दरकार. Not only inputs. Okay. Other aspects also. जेतिकी दरकार exactly सेतिकी जोठी दरकार exactly सेठी. Okay. जेमते आपण precision weapons कहउछन. Laser guided bombs की जहाँ भी precision weapons. Exactly precision agriculture जेतिकी दरकार input सेतिकी आपनकर लागिबो. Okay. So that is the concept of precision agriculture. तेणु आपण प्रथमे दी लाइन रो किछि introduction देबे. So precision agriculture is a revolutionary approach that uses technology to optimize farming practices, increase efficiency, and reduce environmental impact. Okay. तो आम resources कमी चलची but ता ऊपरे pressure बढ़ी चलची resources ऊपर. Limited land अच्छी, unpredictable weather. Okay. Need for sustainable production. इतने बड़ा population को अपन को feed करिवार अच्छी. Okay. So precision agriculture रो तापरे देइची तारा features उडा. So it is data driven decisions. ठीक है. तो आमर जेमती एई पर्टिकुलर सॉइल रे कोन क्रॉप लगेबा कथा. आगुरु कांसेप्ट कोन थिला. ओके. फार्मर कोन करियो देखिबो कि ना एठी समस्त पैडी लगौछन मु भी पैडी लगेबी. बट एबे अपन को सॉइल लैब्स करिका गवर्नमेंट सब बनै छै तो सेठी चासी जाई कि तारा सॉइल सैंपल टेस्ट भी करि परछि कि मोर ओके लैंड रे मु कोन कोन लगै परिबी कोटा लगैले मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आसीबो. ठीक है. So data driven decisions, all these decisions which are taken in precision agriculture are driven by data. Okay. So ଆଉ ସେଟା କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରା ହଉଛି. Collecting real time data on soil condition, weather pattern, crop health and more using sensors and drones. तार ଗୋଟେ example देला. तापरे targeted input application. तेणु केतिकी fertilizers को type रो fertilizers केतिकी दिया हबो को जगह रे दिया हबो. water for example आपण types of irrigation रे. Okay. आपण को माइक्रो इरिगेशन करता. तो माइक्रो इरिगेशन पर्टिकुलर टाइप रो क्रॉप पई माइक्रो इरिगेशन ता कोटी हबा कथा. रूट्स रे हबो आ कोटी हबो राइट.
So precisely applying fertilizers, pesticides and water only where and when needed, eta bahut hi important. Minimizing waste, okay, जोटा कि हमें तारो जो phrase टा use करथिलु, okay, maximum from minimum, ठीक अछि, maximum from minimum inputs देखिए अपन maximum outputs पाई परिबे. तापरे variable rate technology, so adjusting planting density, irrigation pattern and other practices based on field variability. Okay, field conditions change होची, weather other things change होची, तो से हिसाब रे हमरो input दबारो केते क्वांटिटी रे दिया हबो, को मेथोडोलॉजी रे दिया हबो, सेगुडा भी चेंज हबो. Then yield optimization, maximizing crop yields by reducing resource consumption, जोटा हमें कहलु maximum from minimum. Okay, तापरे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जहाँ भी अपन फर्टिलाइजर आखि बंद करके अपन यूरिया यूज करिवे कि अलग भी जहाँ भी फर्टिलाइजर्स यूज करिवे, केमिकल्स यूज करिवे. Okay, so not that, but environmental sustainability, whatever steps you are taking, okay, that should protect the ecosystem, that should protect the, okay, land and the soil fertility, okay, and water quality. ठीक अछि, नहले कोन होबो ना, आपण indiscriminately जदी fertilizers use करिवे, there are huge repercussions. You see what is happening in Punjab. Certain parts of Punjab are known as the cancer belt of India. ठीक अछि, सेठी कोन हिची ना, सेठी फार्मर्स माने से माने आखि बंद करी इंडिस्क्रिमिनेटली जोड़ा सस्ता रे मिलला सेही, ओके, यूरिया एंड अदर फर्टिलाइजर्स यूज करचंदी, जोड़ा कि वाटर टेबल को कंटामिनेट कर दैछि. ओके, ओडिसा रे भी बरगढ़ एंड अदर प्लेसेस रे सेम जिंस इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज वेरी हाई. ओके, सो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन रो थिला प्रेसिशन एग्रीकल्चर इंडिया रे पॉसिबल की, विल इट बी पॉसिबल इन इंडियन एग्रीकल्चर. ओके, सो ऑप्शन विल इट बी पॉसिबल माने कोन, बहुत जगह हेलानी भी, इट इज पॉसिबल, बट कोन कोन चेंजेस आपन करया पड़े. सो फर्स्ट हला प्रॉब्लम हला स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. ठीक अछि, हम जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड ही छी, ओके, तो सेटा गोटे बड़ इशू. तो टेक्नोलॉजी आपन भलो काम करिवो जदी लैंड साइज, एवरेज लैंड साइज ता बड़ हबो, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. ओके, तापर आसला कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. तेनो से जो टेक्नोलॉजी आपन कहउछंदी, फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर खरिकारे अपन देखिबे, अपन ड्रिप इरिगेशन कहउछन. ड्रिप इरिगेशन रे कोन ना, पूरा आपनकर फील्ड सारा गोटे पाइप रो नेटवर्क जीवो, सेठी होल सेही थिबो, आउ बहुत कम प्रेशर रे पानी आसीकी रूट्स रे टप 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 पडुथबो. ठीक अछि, तो पानी आपनकर बहुत कम खर्च होबो, बट यील्ड विल बी एक्सीलेंट. ओके, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई. फार्मर पई सब फार्मर सेटा कर परिबे. ठीक अछि, आउ सेटा सब क्रॉप्स पई हे परिबे. ठीक अछि, हॉर्टिकल्चर से टाइप रो क्रॉप आपन कहबे मु पैडी फील्ड रे जदी लगेबी सेटा, तो पॉसिबल नो, एते पैसा मते लगाय पड़िबो, तब सेटा काम न भी दे पर. ठीक अछि, सो cost of technology is very high. Government subsidize करूची, but still then जो पार्टा फार्मर को करिया कथा तारो भी कॉस्ट एते अधिकार होची कि से इंडिया रे. ओके, at least the small and marginal farmers का सेटा काम न हो. बड़ फार्मर्स करी कि बहुत पैसा पाउचंदी. ओके, बड़ पैसा माने बहुत पैसा पाई कि बड़ बड़ गाड़ी सब किनुचंदी, ताको प्रोटेस्ट रे नउचंदी दिल्ली को. ठीक अछि, तो but that may not be possible for most of the farmers who are either marginal farmers or small farmers. Okay, तापर need for training, तो आपनकर प्रॉपर ट्रेनिंग भी दरकार, एगुडा आस्ते आस्ते होची. फॉर एग्जांपल एबे गोटे पायलट प्रोजेक्ट अपन जानचंदी, सेटा स्टार्ट हेतिला पंजाब रे, एंड नाउ इट हैज कम टू अदर प्लेसेस, साउथ रे भी हे सची. फॉर एग्जांपल आगुर गोटे मेजर इशू थिला कोन कि फील्ड रे पानी दबा. ठीक अछि, सो फिजिकल प्रेजेंस गोटे कार दरकार. सपोज मोर गोटे छोटिया फील्ड अछि, मु अलगा भी कोन गोटे काम करूची. ओके, बट मते पानी दबा पे सिटी प्रेजेंट रहा पे पड़िबो. तो गवर्नमेंट अब डिफरेंट सब जंत की मोबाइल थ्रू रु आपण पानी पंप ऑपरेट कर दी पाउछंती. आपण अछंती गोटे दूर जगह रे, बट गोटे कॉल करिवे आउ से एक्टिवेट हे जिवो आपण को मोटरटा. दोस टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट इज नाउ इंटीग्रेटिंग फॉर द फार्मर्स आल्सो. ओके, तो तापे ट्रेनिंग करिका दरकार. फार्मर्स नीड टू बी ट्रेन्ड इन यूजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा. ठीक अछि, केना एथरे कोन हमें फर्स्ट डेफिनेशन रे कोन देखिथिलु, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. प्रिसिशन एग्रीकल्चर रो backbone hela technology, so farmer has to understand at least the applicative part of it, chota taku use karibar ach. Okay, he may not understand the technology behind it, kintu konta karibo seta janiya darkar, joda ki amaro bahut farmers ku train kare padibo. Then infrastructure gaps,
ओके इंटरनेट कनेक्टिविटी पावर सप्लाई ए सब जिंस ओके एटलीस्ट रूरल एरियाज तो 100% अपन ओके गारंटी करि परिबेनी इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट बट स्टिल लॉट मोर हैज टू बी डन देन गवर्नमेंट सपोर्ट ओके गवर्नमेंट सपोर्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड जेमति कि एथरे जा सब एक्सपेंसेस होची गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दोची ओके सक्सेस स्टोरीज भितर आपण को वर्ल्ड रो आसिला क्रॉपेक्स जोटा इजराइल रो ओके एटा गोटे एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग वेरिएबल रेट इरिगेशन रिकमेंडेशंस ओके फसल बेंगलोर रो जोटा आउ ओयूएटी रो बहुत गुडे तांकर जो फील्ड्स करिकारे ओके ट्रायल फील्ड्स करिकारे तांकर प्रिसिजन एग्रीकल्चर स्पेशली पैडी ऊपर तांकर रिसर्च होची ओके सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट पॉइंट्स गुडा बेसी इंपोर्टेंट तार गोटे दी लाइन एक्सप्लेनेशन आपण जते सिंपल भाषा रे निजे करि परिबे एग्जांपल्स दबाटा इंपोर्टेंट ओके 15th question hela will the aging population be a problem demographics ro asela will the aging population be a problem in India if not what are the problems you foresee in the age structure of Indian population तो aging population हम पई गोटे problem हबो कि हमको देखिया पड़िबो हमरो जो डेमोग्राफिक ओके चार्ट टा जो ग्राफ टा कि पिरामिड टा एज पिरामिड टा तार बेस टा बहुत हेवी अछि ठीक है तो आउ सेटा आस्ते आस्ते ऊपर को जिबा पई इट टेक लॉट ऑफ टाइम ओके बिकॉज़ हमर पॉपुलेशन एते बड़ वी आर नॉट लाइक चाइना नॉट चाइना जापान फॉर एग्जांपल जापान रे कोन हिची ना तांकर टेक्नोलॉजी अछि तांकर लोक नाहंती हो ठीक अछि मैक्सिमम लोक एबे तांकर वर्किंग एज ग्रुप रे नाहंती ठीक है तो डिपेंडेंट एज ग्रुप को पळासलानी हमर भी से अवश्य सब देश संगे हुए हमर किंतु हो पई बहुत समय लागि जिवो ठीक है तो हमको हो पई बहुत समय लागि जिवो बाय दैट टाइम वी कैन से दैट हमें डेवलप्ड कैटेगरी पाखा पाखी पहुंच जाइथिबा ठीक अछि so first point पचारला क्वेश्चन रे कि will the aging population be a problem in India ठीक अछि so aging population रा issues कोन सेटा फर्स्ट अपन लिखिया पड़ियो so slower growth okay so जेतले नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बढ़ी जिबे छोट पिला आउ जो माने एजेड तो तांकर ओके स्लोअर ग्रोथ सेटा ओटे रहइबो देन डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हमर जेतु लार्ज पॉपुलेशन अछि हमर बहुत दिन पर्यंत एबे बहुत वर्ष पर्यंत आपण कहि परि हमर वर्क फोर्स बहुत अधिका रहिबो ओके बट से माने बुढाबे गोटे दिन ऑब्वियसली आउ से हिसाब रे पॉपुलेशन ता कमुची ठीक अछि तो माने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ओके रेट ऑफ ग्रोथ ता कमुची हमर ठीक अछि सो व्हेन दैट विल कैच अप आस्ते आस्ते हमर जो माने डिपेंडेंट को पॉपुलेशन बढ़िबो से हिसाब रे ओके बट ताको हो पे बहुत टाइम अछि डेमोग्राफिक डिविडेंड जतले आपण पढुचंती ऑलवेज रिमेंबर आ ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जदी आसीबो types of demographic dividend what is the first demographic dividend second demographic dividend third demographic dividend and also fourth demographic dividend definition to be टिके आपण मन रखबे okay that is very important for example in japan कथा कहउतिल जापान रे से माने कोन करचंदी ना जो माने 60 65 हे जाउची तांकू किछि टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देकी फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल एल्बो जॉइंट्स नी जॉइंट्स करिका लगेकी तांकू आउरी काम करिया पे जिंति सने एबल हे जिवे ओके जेहेतु तांकर आउ पॉपुलेशन कम ही जाई चाइना आल्सो हैज टू डू दैट चाइना रो पॉपुलेशन बहुत बड़ बट देन बहुत वर्ष हला वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करिवारु तांकर प्रॉब्लम अछि जापान रे टिके सोशल इश्यूज इफ यू सी इन द जापानीज सोसाइटी द यंग पीपल से माने एबे टिके टेक्नोलॉजी फ्रीक से माने रेस्पोंसिबिलिटी न पई चाहनांती प्रोजेनी करिया पई चाहनांती कि बा हो पिला छुआ कर से गुडा से माने इंटरेस्टेड ना दे वांट टू जस्ट enjoy their life okay traditionally that is why tanko population khasi khasi jauchi okay then preparation time okay so preparation time so amara bahut samay achi set pe amku आराम रे हमें okay we can adapt to the changes agru व्यवस्था करि परिबा the gradual nature of the change allow India to implement supportive policies for example you see in US and all they have social security amara emti structurally हम कह गले exactly social security त हमें देनु आमे ता जगह सब स्कीम्स गुडा देछु फ्री फूड मिल गला फ्री हेल्थ केयर मिल गला ओके ए सब ए टाइप रो जिंस बट आगु को चाहिए जते बेले गोटे लोक से तार ओल्ड एज को जीवो ताकू सपोर्ट करिया पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ता दरकार हमको एबेटू बने पड़ियो सो वी हैव टाइम हम पाके समय अछि तो एटा सॉल्व करी हबो देन स्ट्रांग फैमिली सिस्टम्स सो एटा गोटे बहुत बड़ डिफरेंस हे जीवो इंडिया रे आउ अलगा कंट्रीज रे ओके अवश्य एठी भी हमरो सेटा न्यूक्लियर फैमिलीज जो बॉडी की से जिंसटा होची इफ यू सी नाउ
you will find that very few people आपण जदि निज चारिपटे भी देखिबे बहुत कम लोकंकर पेरेंट्स तांको पाखे रहउछन्ती ओके पेरेंट्स तांकर इंडिपेंडेंटली अलगा कोठी इच्छा रे हो कि अनिच्छा रे हो से माने तांकर अछन्ती पिला माने तांकर अलगा अछन्ती ओके so that is the thing so such a strong family system at least uh, better or more stronger than the other family systems okay in Europe and other countries तो सेटा गोटे advantage हबो okay कि old age रे तांका family at least extended family थिबो कि immediate family थिबो तांका care नबा पई okay strong family system right तापरे increase savings right so एटा गोटे बहुत तरह advantage आपण कहि परिबे कोन जे एजिंग पॉपुलेशन होची सी तार सेविंग्स करिक रखछन्ती लाइफ लॉन्ग सेविंग्स तांकर ओके तो से सेविंग्स उडा गवर्नमेंट ठीक रे चैनलाइज कले तो आंकु भी लाभ हबो ओके आउ गवर्नमेंट इकोनॉमी की भी बहुत पैसा आछि सेतर ठीक है जी सो इंक्रीज्ड सेविंग्स सो दीज आर द will it be a major problem in India तो सेतर हमें देखु जो कि नहीं मेजर प्रॉब्लम नो हमर समय जेतो अछि हमें स्टेप्स नहीं परिबो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एक्चुअल कौन सो प्रॉब्लम्स है परिबो फर्स्ट हला यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कथा हमें कहूछु इट इज अ डबल एज सोर्ड आपनकर जदि एलिजिबल लोक अछंती जे चाकरी करिया भी चाहउछंती किंतु आपन ताको प्रोवाइड करि पाउनांती ताले असुविधा हबो आगु जाय कि रिफ्ट हबो सोशल स्ट्राइफ हबो ए सब प्रॉब्लम चलियो ओके तो एटा सबुटु बडो इशू कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ता हे पारे बट तारो सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन हेलानी भी आस्ते आस्ते बे कि change in mentality of the people okay change in mentality of the people कोन ना आगुरु जो ट्रेडिशनल कांसेप्ट थिला भाई मोर कोर्स डिग्री सारीबी तापरे गोटे गवर्नमेंट जॉब खोजिबी कि गोटे जॉब खोजिबी नाउ मेनी पीपल ब्रिलियंट पीपल जो माने बिजनेस बैकग्राउंड नुह से माने भी तकर जहा बेसिक एजुकेशन सरला परे से माने कहउछन विल स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन ओके आ बहुत गुडे ताको भी एग्जांपल्स मिली होले ठीक अछि फॉर एग्जांपल आपण देखिबे लास्ट जोटा जो स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे थिला इंडिया टुडे रा से मैगजीन रे देखिबे गोटे स्टोरी बाहरची एमति तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम रे आउरी बहुत जण अछंती सेठी गोटे साउथ इंडिया रो गोटे विडो आउ तांकर पुओ पुओ 14 वर्षर एंड विडो तांकर जे हस्बैंड थिले he was सिबुदे तमिलनाडु स्टेट बस सर्विस रे थिले सो आफ्टर him passing away ड्यू टू डिजीज तो जहाँ तक हेल्प मिलता सी गोटे स्टार्ट कले गोटे कॉन्सेप्ट एंड से एते माने गोटे विलेज रु से स्टार्ट कले और एते भलो कॉन्सेप्ट तंगर थिला कि लाइक से अपन स्टोरी टा पढिबे मोर जा मन पड़छि 5 रुपीस रो चा दउथिले ना कोन एंड दोज हु कुड नॉट अफोर्ड ओके तो ताको फ्री रे दउथिले बट ताको लॉस होनोतला केमति ना तो जो माने पे करि परिबे तांको पई ओके तो यू कैन पे फॉर देम तो सेमति कोन गोटे it was written in the Tamil word it basically means that you can sponsor okay सेमति एटा बहुत ही भलो चलिला आउ you know सेटा गोटे केस स्टडी से सेठी देइथिला that means people are now or the youngsters are now more concerned about skill acquisition ठीक है आपण पीएचडी कर दियंतु बट मे बी यू आर नॉट जॉब रेडी ठीक है rather than that आपण स्किल कोटा भी अछि मु बहुत भलो चा बनौछि ताले मु दिनो को भी लक्ष्य रे इनकम करि परिबे right so that is the thing skills acquisition of skill सेटा बहुत important तो सही हिसाब रे हमर स्किल इंडिया प्रोग्राम हैला गवर्नमेंट भी ता ऊपर सपोर्ट करूची आ गोटे बहुत बड़ा एडवांटेज हैला कोन ना एबे जो करंट प्राइम मिनिस्टर सी जो स्टेट रो आछंदी तांकर बिजनेस रो बहुत बड़ा हिस्ट्री अछि सेठी नॉर्मल पिला माने भी सबले चेष्टा करी हमर बिजनेस स्टार्ट करी ओके तेनु सी जो कथाटा कहले ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर तो बहुत जण एबे सेतरे भी इंटरेस्टेड अछंती okay so ultimately that is the only solution because amaro population jeti ki private sector ho government sector ho se jobs provide kari paribani ठीक है it is not possible so self employment okay and focusing on other technical jobs okay सेगुडा भी आपनकर दरकार हबो then skill gaps education आपनकर workforce रो they are educated but are they skilled यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज टू हमरो अंडर ग्रेजुएट्स की जो ग्रेजुएट मानकर एम्प्लॉयबिलिटी ता हम जा देखिछु सेटा बहुत ही कम अछि ताको फुनी ट्रेनिंग दवा पे पड़ियो से ट्रेनिंग रे भी आपण कंपनीज करी का पैसा खर्च करछन देन रूरल अर्बन इंबैलेंस भी अछि सो ऑब्वियसली दिस इज
urban areas रे better, rural areas रे टिके से facilities उड़ा difficult. Okay, rapid urbanization driven by young people leaving villages can strain city resources and leave rural areas with an even more skewed population distribution. जब तक बहुत जगह होची और तापाई बहुत social issues होची. You see what is happening अपन संदेश खाली र समस्ते जानी चंदे पे कौन होची सिटी सिंती काई की हेला. ओके सेटा भी अपन जदी बुझिबे आ बहुत गुडे अपन देखिबे से जो बॉर्डरिंग विलेजेस राजस्थान रे हो किंबा एपटे वेस्ट बेंगल रे हो तांकर गोटे बड़ इश्यू हला सेठी जेतु जॉब क्रिएशन सेते हेनी पोटेंशियल नाही तो मेन विल लीव ठीक अछि आ रही गले वुमेन. ओके तो ए माने ए सब एंटी सोशल और क्रिमिनल माइंडेड लोक माने सेटा एक्सप्लॉइट करछन. ओके सो देन देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी दैट मींस मेन और वुमेन भितर तंकर काम करिबा तंकर सैलरीज करिकारे स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे बहुत ही डिफरेंस अछि. ऑर्गेनाइज सेक्टर रे सेमते एते डिफरेंस नाही. ऑर्गेनाइज सेक्टर रे कोन ना आपण एटीट्यूड रे डिफरेंस अछि. ओके सो एई जिंसटा एबे भी अछि माने छोटिया लेवल रो नै कि टॉप मोस्ट लेवल पर्यंत. ओके टॉप मोस्ट लेवल पर्यंत मोर जे मेंटर और पीएचडी गाइड थिले प्रोफेसर संगमित्रा मोहंती मैडम सीए वाइस चांसलर थिले आपनकर जो बारीपदा रे जो यूनिवर्सिटी टा अछि. ओके हमर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थिले उत्कल यूनिवर्सिटी रो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सो कोविड रे मैम चली गले तो कथटा हला कि मु भी देखि छी पर्सनली एंड शी वाज अ वेरी गुड रिसर्चर. बहुत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तांको टाइम रे यूनिवर्सिटी को आस्थिला से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बट सब जगह सेम जिंस गोटे वुमेन जोटी आगु जाउचंती ताले तांको यू नो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करिया में पड़िबो. ठीक अछि जो माने इवन आम गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया करछि कि एटलीस्ट हमरो वर्क फोर्स रो एतिकी परसेंट गवर्नमेंट वर्क फोर्स रो वुमेन को पई रखा है. यू गो टू सम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ओके सेठी यू नो द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. ओके आ ए जो गवर्नमेंट हमरो ए जो 33% 1/3 रिजर्वेशंस करूचंती वुमेन को पई तारो एक्चुअल लाभटा आपण 10-15 वर्ष पर एक्चुअली देखि परिबे. तेनु we have ensured by this government has ensured that our society will not become an odisha re at least jinsota jemti ki apanଙ୍କର अलगा कोनोसी स्टेट रे हमर लेट्स से बिहार रे जेमती सिचुएशन अछि कि हरियाणा रे जेमती सिचुएशन अछि ए जेंडर डिस्पैरिटी के नेकी से प्रॉब्लम केबे भी हमर हबनी. इट्स अ वेरी गुड स्टेप. एनीवे जेंडर डिस्पैरिटी नेक्स्ट तापर आसला रीजनल वेरिएशंस. तो डिफरेंट एरियाज रे ओके इश्यूज टिके टिके अलगा रहइबो. फॉर एग्जांपल हरियाणा कथा कहते हरियाणा रो skewed sex ratio. ओके तापर अलगा भी स्टेट्स अछि जारो सेक्स रेशियो बहुत भलो अछि. ओके तेणु सेही सब जगह रे आर हरियाणा रो इश्यूज अलगा रहइबो पॉपुलेशन संगे एटी ओडिसा रे इश्यूज अलगा रहइबो. ओके सो these are the potential problems with India's age structure that you can go through. तापरे next 16 geoinformatics. What are its advantages in planning in various sectors? तो एटा ना आपन को टिके एटलीस्ट 3-4टा सेक्टर ऊपर लिखियार थिला. ओके तो फर्स्ट गोटे बेसिक इंट्रोडक्शन दियंतो कि डेफिनेशन कोन. सो जियो इन्फॉर्मेटिक्स ज्योग्राफी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके अदर एंसिलरी टेक्नोलॉजीज आर आल्सो इन्वॉल्व. कामो कोन होची एतरे इट प्रोवाइड्स टूल्स टू कलेक्ट एनालाइज एंड विजुअलाइज स्पेटियल डेटा aiding in decision making and planning across various sectors. ओके तापर तारा फीचर्स कोन. सो स्पेटियल डेटा कलेक्शन आपनकर रिमोट सेंसिंग ओके जीपीएस एंड जीआईएस. सो एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन तो जहां डाटा आनला ताको फुनी विजुअलाइज करिवो ओके थ्रू मैप्स मॉडल्स एक्सेट्रा. ओके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स यूज करी कि अपन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करिवे. ओके तार गोटे एग्जांपल मु देबी ओडिसा रो एठी तो देइन एठी आ गोटे एग्जांपल देछि बट हमरो गोटे बढ़िया एग्जांपल अछि ओडिसा रो ही जोटा हमें दे परिबो. ओके डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जस्ट लाइक प्रिसिजन एग्रीकल्चर जेमति थिला एठी जियो इन्फॉर्मेटिक्स से जहां अपन फाइनली डिसाइड करछन डिसीजन नउछथि दैट इज बेस्ड ऑन डेटा. ओके एविडेंस करिका अपन को रहउछि जेमति कि एबे कोन होछि ना अपन देखिबे एबे बीएमसी किछि दिन आगुरु लाइक 6 मंथ्स आगुरु बहुत लोगन को असुविधा हला स्पेशली शहीद नगर हरिका रे अलग जगह भी तो सी कौन कले ना से नोटिस गला कि आपण को जहां अप्रूव करथिला प्लान ओके आपण घरटा
टिके एतिकी बढ़ाई देचंती कि एया प्रॉब्लम करचंती whereas समस्त कहले भाई कि विजिट भाई आसी ना मापिबा भाई कि आसी ना कि कॉले केमती तो थ्रू सैटेलाइट ओके थ्रू जीआईएस डेटा से माने सेटा करथिले ठीक सेमती जेतेबेले आपनकर डिजास्टर गोटे फ्लड हे गला गोटे जगह आगुरु कोन थिला ना तो चासी की कंपनसेशन दबो गवर्नमेंट केते कंपनसेशन दबो ताकू ता पई आगुरु जे रेवेन्यू ऑफिसर्स थिबे से माने जाई कि फील्ड विजिट करिवे से गां रे देखिबे एटा चासी रो जमी एतिकी थिला तो पूरा नष्ट हो जाए व्हाटएवर से केतेबेले हबो जेतेबेले पानीटा कमिबो जेतेबेले डिजास्टर रो इफेक्टटा पळैथिबो तापर सब ठीकठा ହେଲା ପରେ ହେଇଯିବେ तो ताकू तो पैसाटा सेई टाइम रे दरकार ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଓକେ थ्रू जीआईएस करिका ଆପଣ जीआईएस ଆପଣ डेटा यूज करके देखि दउचंती कि डिजास्टर हिट करिबा आगुरु कोन केते जगह थिला कोन क्रॉप्स थिला एबे कोन अछि तो से थ्रू हम जानि पाछु हां ठीक अछि 30% अफेक्टेड हे जाइछि ताको इमीडिएटली दे दियो okay so those things are also there then multidisciplinary approach so it is not only geography it is not only information technology lot of other imaging sciences setere rahuchi lot of other things are there okay so geography computer science statistics engineering everything is involved okay advantages of geoinformatics in planning so different domains ro apun jeta ye karbe first hela enhanced understanding okay so jo patterns apun ko midibo okay okay the patterns that you will get the सेथरे आपण जानि परिबे कि एठी कोनटा चेंजेस हेछि किंबा आपनकर जा रिक्वायरमेंट थिला सेथरे आपण जानि परिबे ओके तापरे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ओके सो सेठी अगेन वंस यू नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट तो आपण जेति कि सेठी रिसोर्स दरकार सेति कि एलोकेट करिवे देन डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड ओके प्रिपेयर्डनेस जो आपण डिजास्टर मैनेजमेंट रे गोटे पार्ट टे पढिथिबे दैट इज आपनकर vulnerability maps किंबा vulnerability zone ओके zonation जोटा vulnerability zonation कि एई जोन रे प्रथमे आपण सबुट vulnerable एई जोन ता एई जोन रे प्रथमे काम करिया पे पड़िबो ओके तो एथरे आपनकर जीआईएस करिका बहुत हेल्प करे जियो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत हेल्प करे देन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ओके फॉरेस्ट डेंसिटी ट्री कवर कोठी चेंज हे जाउची ओके कोठी तो इलीगल किछि कोन होउची तो सेगुडा आराम रे जानि हबो एंड देन अर्बन प्लानिंग स्मार्ट सिटी करिका रे हमर जेंति एटा बहुत यूज होचे बीडीए रो जो एग्जांपल ता देली सेटा आपण सेठी यूज करि परिबे ओके सो एथरे प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन ओके एंड पब्लिक सर्विस ऑप्टिमाइजेशन ए जो जिंसडा कहली जेंति कि किछि इलीगल जिंस होउची कि आपनकर एनक्रोच कर दैचंदी ओके तो सेगुडा भी आपण जानि परिबे यूज करि परिबे एटा बहुत इंपोर्टेंट यू हैव टू गिव सम एग्जांपल तो इंडिया रू किछटा एग्जांपल्स देछि चारिटा देछि एते दरकार हमर गोटिटा टाइम केबे भी होबनी ओडिसा रू जहा भी एलबी हम गोटे एग्जांपल दा पड़िबो तो भुवन पोर्टल देछि ओके देन WRIS ता देछि वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और स्मार्ट सिटीज मिशन रे केमति सेडा कोन यूज होछि ओडिसा रो निहाती भाबरे देखिया था एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और आरो बहुत गुडे माने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू रो स्पेशली साइंस एंड टेक करिका रे पढु कि न पढु माने जतले एक्सप्लेन करूछु हमें एई ऑर्गेनाइजेशन रो अचीवमेंट रो आपन को जहा भी लेबे लिखिया पड़ियो कोडा ओडिसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ओके सो सेमानकर जो टेक्नोलॉजीज अछि लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग वाटरशेड मैनेजमेंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन एंड मॉनिटरिंग एगुडा से माने कोचन ओके सो आ गोटे मु जोटा कहउतली जो थरे कि आपनकर जीआईएस डाटा यूज होतिला ओके दैट इज and that project OPEPA रो प्रोजेक्ट थिला सेटा ओडिसा प्राइमरी एजुकेशन अथॉरिटी रो that won the prime minister's award for public administration okay जेतले मनमोहन सिंह थिले प्राइम मिनिस्टर and the project name was e-shishu okay e-shishu रो मेन काम कोन थिला तार ओडे जीआईएस मॉड्यूल थिला जोटी कि से ब्लॉक लेवल रे सन देखथिले सो कि हमरो जीईआर जोटा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोटा ठीक अछि कि नहीं कमुची काई कमुची केमिति बढ़ेबो तो बहुत बढ़िया सेटा थिला एंड इट गॉट द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड इन एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके प्रोजेक्ट रो ना थिला ई शिशु तो सेटा हमें देई परिबा ओके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ भी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट एटा जेतु प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड पाइतिला सेति पे मु कहली लास्ट क्वेश्चन जोडा देला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लाइमेट रेजिलियंस ओके व्हाट इज द नीड फॉर इट सो क्लाइमेट रेजिलियंस माने कोन दैट मींस क्लाइमेट रो जहा चेंजेस होबो ओके
तो ताकू आपण अडाप्ट कर परिबे रिकवर कर परिबे आपण आगुरु गोटे जगह रे चाष करथिले पैडी रो एबे आस्ते आस्ते सेठी टेम्परेचर चेंज हेलानी क्लाइमेट चेंज हेलानी आउ मे बी सेटा चलीबनी ओके यील्ड कमी जिवो आपण बट अलगा क्रॉप्स अछि जोडा आपण यूज कर पर ओके यील्ड आपण बढ़िबो ठीक अछि किंबा अलगा कोनोसी आपण इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेकानिज्म करिका यूज कर परिबे ठीक अछि so climate resilience is the ability of communities to withstand adapt to and recover from the increasing impacts of climate change such as extreme weather events rising sea levels and changing weather patterns okay so the need for climate resilience is urgent to protect people livelihoods and infrastructure so tara okay features करिका characteristics करिका देला climate resilience रो characteristics कौन तो first है preparedness ओके तो कौन हेई पारे आमे जो जगह रे रहउछु फिशरमैन कोस्टल एरिया रे जो रहउची सीटा माडुची आगु तो सी सेही हिसाब रे ताको प्लान करे पड़े म घरटा दले आउट के दूर रे करे पड़े कि जाबी ओके गोटे एग्जांपल हैला सो प्रिपेयर्डनेस तापर हैला एडाप्टेशन धर बढ़ी गला सी लेवल आसी गला सी आगु को आसी गला ओके 2-3 मीटर आगु को आसी गला और सेमती ही रहला तले मते से हिसाब रे आई हैव टू अडैप्ट टू इट ओके फार्मर को सेमती जेमती कहली कि क्लाइमेट चेंज जो आउ पैडी कल्टीवेशन एते फ्रूटफुल हबनी ताले से अलगा कोन देखिबो इन द चेंजिंग क्रॉप वैरायटीज और बिल्डिंग सी वॉल्स व्हाटएवर देन मिटिगेशन ओके सो मिटिगेट केमती करिवो जो प्रॉब्लम ता तको एबे आसीबो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज देन रिकवरी ओके रिकवरी हाउ ही विल रिकवर फ्रॉम द प्रॉब्लम he is in okay climate related issue then social equity okay social equity कोन नै जो क्लाइमेट रेजिलियंस एटा समस्त को जेमते बेनिफिट करिवो ना कि गोटे पर्टिकुलर क्लास की कम्युनिटी ओके कि रिच लोक को खाली ओके सो तापरे नेक्स्ट दी सेकंड पार्ट ता देला व्हाट इज द नीड फॉर इट माने ता सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस कोन ओके क्लाइमेट रेजिलियंस तो फर्स्ट हैला प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स ओके ए हेडिंग सुडा इंपोर्टेंट ठीक है तापरे आपण एक्सप्लेनेशन जा जिम दोचनी निज इच्छा और समय हिसाब रे ठीक है अब जोटी समय नहीं तो खाली पॉइंट्स लिखिबे कोन करिवे ओके तापरे सेफगार्डिंग लाइवलीहुड्स अच्छा आ गोटे कथा के जन पचार थिले हाउ टू राइट इट एटा तो ठीक अछि गोटे खाता रे लिखिया पे गोटे बही रे प्रिंट करिया पे ए प्रोसेस ता ठीक अछि बट एग्जैक्टली जदी आपण एम्ति लिखुचंती एग्जाम रे तो बहुत भलो जदी समय न होउची माने सेफगार्डिंग लाइवलीहुड्स लेखि कि एम्ति कॉलम देई कि तापरे आपण ताको एक्सप्लेन न करी कि गोटे लाइन रे एक्सप्लेन करचनी सेफगार्डिंग लाइवलीहुड ता अंडरलाइन कर देले भी हबो जोटा कि सेंटेंस रे लिखा हिथिबो तर समय मोटे बंची जीवो ठीक है स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेणु जहाँ भी जमती आमर सुपर साइक्लोन पर सबु कोस्टल एरियाज रे आमर मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स बिल्ड है मल्टीपर्पज माने सेटा पीस टाइम नॉर्मल टाइम रे सेटा स्कूल्स रो काम दोउची कम्युनिटी सेंटर्स रो काम दोउची ओके तो सेगुडा आपण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अंडर रे बहुत वे टाटा करिचे लॉट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो डन इट ठीक है तापरे आसला रिड्यूसिंग इकोनॉमिक कॉस्ट्स so that is also one of the important needs okay economic cost jemti reduce karibo so climate resilience ro seta bi gote important jinso okay so proactive investment in resilience is far more cost effective than responding to disasters so for example you know that the house building techniques in Japan are completely different kaina takara earthquake sobole hote ओके सेमन जदी नॉर्मल घर करी घर भांगी गला पर अर्थक्वेक रु फुनी यू नो नुआ घरटे बने तो ऑब्वियसली बहुत पैसा खर्च हो तो से प्रथम रु एमती घर बनांती जोडा कि अर्थक्वेक को आराम रे रेजिस्ट करि परिबो ठीक अछि तो हमको भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनौछु ओके से सब जिंस करिका भी हमको माइंड रे रखिया पड़िबो हमर से एरिया रे कोन ओके डिजास्टर को डिजास्टर को प्रोन अछि ठीक अछि सो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सक्सेस स्टोरीज किछटा आपण दे परिबे जेमति कि एटा गोटे देछि वर्ल्ड लेवल रे बांग्लादेश साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम और नेदरलैंड्स रो डेल्टा प्रोग्राम फोकसिंग ऑन लो लाइंग एरियाज फ्रॉम सी लेवल राइज थ्रू एडवांस इंजीनियरिंग एंड नेचुरल सॉल्यूशंस ओके तापर इंडिया रे बहुत गुडे दे परिबे हम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स इन महाराष्ट्र सेटा गोटे देला तापर चेन्नई रो
restoration of traditional rainwater harvesting systems. Okay, the city for water security, how reduced flooding. Chennai re nale, you remember the famous, Chennai floods. Okay, ବର୍ଷା ରୁ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ନେଭି ହରିକା ଯାଇକି ସବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଲୋକ. ଓଡ଼ିଶାର ବି ସେମିତି. Okay, so mangrove restoration along the coastline and Odisha disaster recovery project following cyclone Phylline. आउरी भी बहुत गुडा अछि आपण जोटा ओडिसा रे दे पारिबे. ओके, जेमति कि ए Phylline पर से कहला cyclone resistant infrastructure. ओके, and early warning systems. तो जो जगह रे गोटे बड़ प्रोजेक्ट थिला बे बहुत जगह रे हेलानी सेटा जो जगह रे cyclones ओके हबार chances बेसी अछि coastal areas रे सेठी there is a huge plan and it has already started of under okay जो cables करिका आपण power cables करिका सेटा underground रखिया पे rather than okay overhead cables. ठीक अछि केते जगह रे छोड़ा हेई गलानी. So this was basically your 17 question थिला जा भितर 15 टा आपण करियार थिला. Question 1 to 5 were compulsory. Those were 20 mark questions of 300 words. बाकी 12 टारू एनी 10 आपण कर परिवे जोतरे की 115 marks रो 250 words भितर आपण लिखिबार थिला. Okay, this was the structure. Next session रे हमें paper 2 GS paper 2 टा start करिबा. Okay, any doubts or anything if you want to ask, you can ask me now or you can WhatsApp me later. PDF is available in the group and also in the Telegram channel.